write a program which input x and y and display x की power y, x to the power y. Directly I cannot do this. I have to use this POW function which is stored in this math.h header file. So for this I have to include one more header file as include math.h, because this header file having a function POW. So then I have to input, I have to input x and y. I am taking two variable x comma y, then printf, enter x and y, then scanf, %d, then add ampersand a, then ampersand b. Then I have to perform x की power y, a b नहीं है यहाँ पर, x and y है. So now I have to calculate x की power y. Then I have to store the result also. So suppose there is a variable z which is used to store the result. So z equal to, I have to write POW x comma y. So now z is actually having x की power y, then I can print z. So print %d z. बट यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वी आर यूजिंग इंट डेटा टाइप एंड द रेंज ऑफ इंट डेटा टाइप इज -32,000 समथिंग टू +32,000 समथिंग, और जब हम ऐसे पावर निकालते हैं तो 32,000 से ज्यादा आ सकती है, तो वहां तक तो ये सही करेगा, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो पहले सपोज x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 4, सो आई एम कैलकुलेटिंग 2 की पावर 4 विच गिव्स यू द 16. तो इट इज डूइंग वेल. लेकिन अगर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आप देंगे, देन सपोज 23 की पावर 32, you can see we are getting the result 0. Yes sir. It is actually out of range. So what should I do to increase the range? तो -32,000 से +32,000 तो सही चलेगा, तो थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा. x और y में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो z है, इस z को आप लॉन्ग इंट यूज करते हैं. क्या यूज करें इसको? लॉन्ग इंट. और जब भी आप इसको लॉन्ग इंट यूज करेंगे तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ d we have to write ld, right? Yes sir. Let's save first. So suppose 5 की पावर 8.